फ्रेंड्स, रूपकथा घोष एजुकेशन चैनल में फिर से आप सब लोग का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। In my previous video, I am discussing about Horcrux and Hathayoga. This is our dense physical body. Through Hathayoga, we can transform our dense physical body into particles of light. But how? Let's know. Friends, do you know where does our life lie in our physical body? दोस्तों, ये जो मेरा शरीर है, इस जिसको हम पिंजरा कहते हैं, हम इसे पिंजरा ही बोलते हैं। तो ये पिंजरा के अंदर कहाँ मेरा प्राण ऊर्जा छिपा है, क्या इसके बारे में आप लोग का जानकारी है? देखिए, आजकल का दौड़ भाग का जिंदगी में हम लोग सभी लोग अंधे घोड़े के जैसे पैसे के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, पैसे जरूरत भी है, लेकिन क्या आप कभी अपने अंदर झांक के देखे हैं? क्या आप कभी अपने अंदरूनी क्षमता के बारे में जानने का कोशिश किए हैं? In this life, in this age of science and technology, our life becomes faster. Like a racehorse, we are running on a specific track without knowing our purpose. Friends, are you ready to discover yourself, to discover your fullest potential? So you should know about Kundalini. The Sanskrit word Kundalini means coiled snake or coiled serpent. But where does it lie? It lies under the spine, in our pelvic region. It is the divine energy that was created under the spine, and it is believed that it was there since birth. Great goddess Kundalini, the primordial energy of the self, sleeps at the sexual region of the body. She has a form rather like a serpent, 3.5 coils. As long as she remains asleep, our true knowledge doesn't arise. Our individual self is limited. Kundalini is the divine feminine energy. Now, who is this divine feminine energy? It is the ultimate life force, the serpent power, the omnipotent power, our creative energy, and the inner fire. The same energy exists in different religion with a different name. According to Hindu tradition, this Kundalini is known as Goddess Durga, Goddess Tara, Goddess Kali, the Sakti, the symbol of Sakti, the ultimate power. According to Buddhism, this is known as Devi Tara. According to the Greek myth, this is known as the divine feminine energy known as Urani, who created the whole universe. Just as the right key unlocks a specific door, similarly Hathayoga unlocks the Kundalini and permit ourselves to experience the universe and obtain liberation. तो दोस्तों, आज यही तक ही. We will stop here. In my next video, I will discuss about how to awaken this miraculous power of Kundalini. कुंडलिनी चक्र को हम लोग कैसे जागृत करेंगे? How to arise the power of कुंडलिनी. तब तक के लिए आप सब लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार. फिर मिलेंगे ये कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करते हैं इस वीडियो को लेके. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. इसके साथ कुंडलिनी शक्ति को भी मेरा नमस्कार. थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्रॉम रूपकथा.